everyone, and we are doing structure and function of living organism with this special reference to animals, and we have completed respiratory system, we have completed circulatory system, where you have seen the video of heart and lungs and blood vessels. We have done the blood, we have done nervous system, we have done in which brain, about we studied about different parts of the brain, and thereafter we have studied spinal cord and sense organs. We have studied this. You must have remembered. We have completed up to this part. Now let's complete this. Now why do we need this excretory system? So the removal of waste materials produced in the cells of the living organism is called excretion. Okay, एंड वेयर एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्या चीज़ है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है. तो द वेस्ट मटेरियल क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया एंड स्वेट, ये सारा हम लोग को निकालना है. तो ये जो निकालने के लिए हमारे पास ऑर्गन्स है, द ऑर्गन्स ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स द ह्यूमन बॉडी आर, क्या चीज़ है, लंग्स, kidneys and sweat glands. sweat glands कहाँ पर होते, जो हमारा पसीना आता है, it's on our skin. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर कैसे बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. दैट यू नो, रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दैट हैज़ टू बी रिलीज्ड, रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. Thus, our lungs act as an excretory organ for removing the waste product called carbon dioxide. Now, अब और बाकी चीज़ कहाँ से निकलेगा, just urea is produced as a waste product by decomposition of unused food. Unused food जो है decompose जो नहीं हो रहा है, food proteins in liver, and urea is removed from the body by kidney. अब हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन का सबसे बड़ा यहाँ पर फंक्शन आ रहा है कि यूरिया को जो रिमूव करना है, दैट इज़ थ्रू द किडनी, एंड किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन आर बॉडी. यही हम लोग का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि यूरिया इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस which has to be removed from the body. If the urea and other wastes are not removed from the blood of a person constantly, the person will soon die. Dialysis और kidney disease, kidney function, kidney failures होता है ना बहुत. किडनी का अगर बीमारी किसी को होता है तो कहते हैं कि हाँ, इट्स अ सीवियर, मतलब सो नॉट गुड थिंग, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा है. सो किडनी को फंक्शन कराने के लिए डायलिसिस वगैरह किया जाता है. तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इन सीनियर क्लासेस. सो अप टिल नाउ आवर किडनी रिमूव यूरिया. क्या चीज़ रिमूव करता है, यूरिया, एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव करता है. हाँ, थोड़ा गंदा लग रहा है. तो किडनीज हमारा क्या कुछ मेरे आज मोबाइल कुछ फंक्शन सही नहीं कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं. तो क्या चीज़ करता है ये, दिस इज़, हाँ, तो व्हाट, तो किडनी क्या रिमूव करता है हमारे बॉडी से, kidneys removes what, यूरिया एंड एक्सेस वाटर, जो टॉयलेट विजिट करते हो हम लोग, वाटर एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट्स जो होता है बॉडी में फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, तो ये सारा चीज़ इट हैज़ टू बी रिमूव्ड. और उसको रिमूव करने के लिए क्या फंक्शन कौन फंक्शन करता है, दिस इज़ आर. अब देखो इसमें इफ़ यू विल सी, ऑब्जर्व इट, ये जो है ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर, दिस इज़ वेना कावा. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज़ द बिगेस्ट वेन. जो ब्लड वेसल है, वेन, उसका क्या फंक्शन है पता है ना, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. जबकि ये जो रेड वाला दिख रहा है, दिस इज एरोटा, विच इज बिगेस्ट आर्टरीज. ओके,
So this is our what kidney और चलो अब देखते हैं आगे. So as the body function, many waste products are removed from the body. This has to be removed, and these products need to be removed from body. The excretory system consists of organ that helps in eliminating the waste product from the body. And the kidneys, as I told, is an excretory organ that filters out waste product from the body and eliminates from the form of urine. क्या चीज़ है waste product? Urea and excess salt water, है ना. The skin gets rid of water and excessive salt in the form of sweat through the sweat glands located on the skin. एंड लंग्स भी अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए. लंग्स भी एक हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. फीसेस जो मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, दैट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस. हम लोग इसको पढ़े थे किसमें, इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पढ़े थे कि रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी का है वो इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है. यूरिन इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वाटर बॉडी एंड इज़ एक्सक्रीटेड through system. What's that? Through the urinary system. Now urinary system में क्या क्या चीज़ है तो देखें. पहले तो ये हमारा किडनी है. एंड किडनी क्या है? पेयर ऑफ किडनी इन द ह्यूमन बॉडी. ईच किडनी इज ब्रिक. ईच किडनी, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द किडनी? ब्रिक रेड. एंड व्हाट इज इट शेप? बीन शेप्ड. दे फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड. सो यहाँ से ये जो रेनल आर्टरी या जो प्योर ब्लड इसमें है, एंड लिक्विड कॉल यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लाइट येलो कलर. जो यूरिन का जो कलर होता है लाइट येलो होता है. इन दिस वे द ब्लड गेट्स प्यूरिफाइड फ्रॉम द किडनी एंड किडनी हेल्प्स इन रिमूविंग आवर ओनली हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज यूरिया बट ऑल्सो एक्सेस वाटर फ्रॉम. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पानी निकल रहा है उसके साथ यूरिया, जो जस्ट वी हैव डिस्कस्ड. तो दिस इज कॉर्टेक्स, आउटर वॉल ऑफ द किडनी एंड पिरामिड, रेनल आर्टरी एंड यूरेटर. ये सब चीज़ जो है ये वी विल स्टडी इन द सीनियर क्लासेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि क्या क्या चीज़ है. हाँ, यूरेटर, टू थिन वॉल्ड यूरिन कैरिंग ट्यूब. सो नाउ सी कम बैक टू द डायग्राम. जस्ट थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स किडनी टू द ब्लडर एंड दिस इज यूरिनरी ब्लडर. यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है एंड यूरेथ्रा से बाहर कर दिया जाता है. ओके, तो लेट्स सी अब कितना ब्लैडर में यूरिन रह सकता है. यूरिन चलो इसमें द यूरेटर्स आर टू थिन वॉल्ड यूरिन कैरिंग ट्यूब्स. दे स्टार्ट फ्रॉम ईच किडनी एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? इट्स एक्ट्स एज स्टोरेज ऑफ urine. It's a small bag-like structure in which the urine is stored. होता है ना, जब ज़्यादा पानी पीते हो तो many times you have to visit the toilet. The human being excretes about 1.5 to 2.5 liters of urine every day. इसीलिए कहा जाता है कि पानी सफिशिएंट पीना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. The size and position of the urinary bladder varies with the amount of urine it contains. It's bag-like flexible structure where the जैसे यूरिन ज़्यादा होगा तो फैल जाएगा, कम रहेगा तो कम फैला रहेगा. ओके, चलो अब आगे देखते हैं. एंड यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन को बाहर कर दिया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है. नाउ skeletal system as you know that it gives the frame to our body. So skeletal system includes all the bones. Just see this, bones, joints in the body. Each bone is complex living organ that is made up of many cells. बोन जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेल्स है, प्रोटीन, फाइबर्स एंड मिनरल्स एंड स्केलेटन एक्ट्स एज अ it gives a shape to our body, frame to our body. So let's continue. The human skeletal system consists of skull, backbone, ribs, hip bones and bones of arms and legs. The skeletal system performs many functions. It provides the body its shape, form, helps in movement with the help of muscles, and protect, of course, जो सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन है उसको भी प्रोटेक्ट करता है.
जैसे हार्ट प्रोटेक्टेड है, किडनीज प्रोटेक्टेड है फ्रॉम इंजुरीज. बोन्स आर joined together by elastic strands called ligaments. You remember ligaments? एक minute. You remember the ligaments? What are ligaments? So ligaments are what? Tough fibrous band of connective, ये है ना connective tissues हैं, that serves, जो कि support में help करता है internal organ and hold bones together in proper articulation of bones. मतलब इसको movement में help करता है ना, fibrous bones. Yeah, it means this is connective tissue. And muscles are attached to bones by a non-elastic tissue called tendons. Tendons क्या हुआ? ये भी एक टिश्यू, ये भी टाइप ऑफ टिश्यू है that attaches a muscle to other body part. यानी ये भी ये जो टेंडन्स है ये अटैच करता है बोन्स को डिफरेंट और मसल्स को. इज फॉर्मली कनेक्टेड टू मसल्स के पास मसल में एंड एट वन एंड एंड टू कंपोनेंट्स ऑफ द बोन एट इट्स अदर एंड. ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है बोन्स और मसल्स को, विच हेल्प्स द बोन टू मूव. The overall human skeletal system is a mobile framework. Of course, you can move your hand there and there. You can dance well because of the movement of the bones. You can bend, you can walk because of the movement of the bones. Now, reproductive system. You know, every living organism, all living things reproduce to ensure the continuity of their species. We all are the part of that. If we फिर क्या हो गया, हाँ ठीक है. So all living things reproduce to ensure the continuity of this species. The reproductive organs in males and females are different in size as well as in their function. In males they are what? ये तो मेरे डिलीट हो गया. टेस्टिस एंड फीमेल्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, टाइनी cells called sperms. ये you will study in the senior classes about the different how human reproduce. Sperm with an egg is called fertilization. ये one line answer बनता है. The fertilized egg develops into an embryo. The embryo जो stomach के female stomach में छोटी बेबी बनती है, तो embryo grows and forms a baby inside the body of the female, just like you were in the stomach of your mother. Okay, so what happened? This is the female reproductive system. Uterus, fallopian tube and ovary. Ovary में ही बेबी का ग्रोथ होता है. ओके, चलो आगे देखें आगे क्या है. क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से हम लोग. हाँ, और ये की वर्ड्स है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ लर्न ऑल द कीवर्ड्स. ये सारा अगर याद कर लोगे, इफ़ यू विल लर्न ऑल द कीवर्ड्स, बहुत काम आसान हो जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसी से हो जाएंगे. ओके, सो एंड यू मस्ट नो इतना. इफ़ यू लर्न द कीवर्ड्स एंड यू मस्ट नो 80% of the work is, or 90% of the work is complete. Now let's do the fill in the blanks. The process of breaking down of food into fine and soluble particle is called. अभी तुम लोग we were in the classroom, खूब हल्ला होता है कि इसका आंसर क्या होगा. digestion. Okay, digestion. Blood vessels that carry blood from organ to heart are called veins. Veins. The nervous system consists of billions of nerve cells. Nerve, N-E-R-V-E. Nerve cells. Okay. And the right portion of the brain controls right. And better you see your book. इसमें थोड़ा सी गड़बड़ी है. And kidneys are क्या शेप है ना, तो ये कैसा होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन दैट हेल्प्स इन फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट. एंड क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट.
Okay. The skin removes water and excessive salts in the form of the skin remove sweat पसीने के फॉर्म में निकलता है. The male reproductive organ system has a pair of testes. Let's do the true and false. Large intestine is responsible for digestion and absorption of food. False. कौन सा होता है? Try to recall. Pharynx is also called the voice box. Is that correct? False. That is larynx. है ना? Blood helps in maintaining our body temperature at a constant value. Very true. बिल्कुल सही. Blood हम लोग को help करता है कि हमारा body का temperature same रहे क्योंकि we are warm blooded animals. Now see what is the next question. The blood vessels which take blood away from the heart to various parts of the body is called arteries. True. Kidney filter out waste from the blood. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Now bile is secreted by किसके? salivary gland से? नहीं liver से. चलो next let's see. The food is taken in human being stays about there 2 to 3 hours. भाई कहाँ पर? Stomach. Tube-like structure attached to the brain is called spinal cord. The organ in the human body which filters out waste products such as urea from the blood is called kidneys. आगे देखें. Let's move to the next part. Ovaries are the part of reproductive system. Yes, female reproductive system. So how many teeth are present in a 4-month-old baby? देखा है छोटे बच्चे 4 महीने के बच्चे के मुंह में नो टेथ होता है क्या? 0 टेथ, नो टेथ, क्योंकि उन लोग का दांत आया ही नहीं होता है. Where is saliva produced? In the mouth. Define respiration. Just go to the keywords. I suppose keywords में होना चाहिए respiration. अगर नहीं है तो write down the definition of respiration as तो respiration का आंसर कैसे लिखें? चलो let's write the answer. Respiration यहाँ पर मैं लिखती हूँ so that you can write. Respiration. So respiration is a process in living organisms involving the production of energy with the intake of oxygen and release of CO2. Okay, so this is respiration. You can write up to, you can use other answer also. Okay, so this is respiration, answer 2. Let's move to the next part. What is there? Name the flap that shuts off the windpipe when you swallow food. Okay, what is that? Shuts off the windpipe when you swallow food. That is epiglottis. Okay, now answer this. How many types of vessels are found in the circulatory system of the human being? 3, na? That is 3 types. What are those? Veins, arteries, and capillaries. Okay, now
List down the main organs of the nervous system. You can go to the page number 148 and write down the main points, that is list down the main organs. Main organs are brain, spinal cord, nerves, all the highlighted one, nerves and sense organs. Name the structure that protects the spinal cord. क्या कौन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को? बैकबोन है ना, बैकबोन, vertebrae. Name the process of fusion of egg with the sperm, that is fertilization. That's all. अब आगे बढ़े. Let's move to the next part. What is digestion? Starting from the mouth, state the various steps involved in digestion. Now you better go to page number, its direct answer is there. What is digestion? It's there in page number 141 only. You can simply copy down from there the process of, you can see the book also, process of breaking down of or conversion of food into what? Very fine and soluble substance. Fine and soluble substance or particles is called, soluble particles is called digestion. Simple. यहाँ से direct you can pick up from the book and state the various steps in the digestion of food. तो सबसे पहले different steps involved. First step क्या है? It goes into the mouth. थोड़ा सा तुम लोग माउथ के बारे में लिख दो. First write some about mouth. Then mouth में teeth के बारे में लिख दो. Salivary glands के बारे में लिख दो. Tongue है ना. And then write down about food pipe. And then write down about stomach. Different steps involved in food has to go in these steps, these stages, in order to get digested. So food pipe, stomach, and then small intestine क्या होता है वहाँ पर, and then large intestine में क्या होता है ना. तो डाइजेशन के बारे में पूछा गया तो यहाँ तक काफ़ी है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक. ओके, तो आई होप यू कैन डू इट ऑफ योर ओन in your notebook. You can take the help of it is given in page number 143, 142, 43 and 44. Okay, so next is draw the diagram of tongue and show the location of the taste buds. See the book, it's there in the book in page number 142. See 142, it's there. Explain the role of diaphragm in the process of breathing. Diaphragm is the organ क्योंकि lungs cannot move of its own, तो उसको help करता है diaphragm by because it is the diaphragm only, it is the movement of diaphragm only and the muscles between the ribs of the chest wall that causes the expansion and contraction of the lungs. Here this go to page number 146. Diaphragm, direct answer is there. Now give the function of the heart and the blood vessel in the
circulatory system. Straight away come to page number 146. Complete it. So state the function of the nervous system, briefly explain the role of nerves in it. So come to page number 148 and it's all there. Nerves का बारे में एक पूरा paragraph है. You write about that. The nervous system is made up of billions of nerves which carry messages throughout the body. The message travels through the cells as a small electrical current called the nerve impulse. Nerves are of two types, sensory nerves and motor nerves. You write complete. Okay, you directly write from the book. The answer is there. The role of nerves in it. Give a brief outline of process of excretion by the kidney in human beings. You draw the diagram. Outline देना ना तो if it is not given you have to draw the diagram, but it is suggested that you draw the diagram and then explain the process of excretion. It's in the page number. This is in the page number. Which page number was that? 150 page number. Please go to the page number 150 and complete it. Now let's move to the value-based question. Value-based question is important because it's important that we inculcate good values in ourselves. So Shadia family was having their dinner on the daughter's day. Her mother told them that their organization has decided to contribute to the education of the children in neighborhood village. She went on to say that their organization is trying to do something similar to what the blood circulating in the human body does. So state the value displayed by the organization in which Sahadia's mother work. So what is that? Which value is that? Cooperation, helpfulness, है ना? Cooperation, helpfulness, care. These are the values. State any two function of that the blood circulating in the body does. क्या करता है? अच्छी बातों को दूर तक फैलाता है. It means blood circulate कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? Oxygen rich blood जो है, oxygen rich blood is sent to each part of the body and CO2 rich blood is sent to lungs for further purification. है ना? This is it. Now what is there? Have a discussion in the class which about why they agree disagree with the comparison made by the chalo theek hai. Now something to do. See this. I hope I think that you can make the stethoscope. एकने बनाया हुआ था. It is used to hear the heartbeat of the person. Stethoscope बड़ा interesting चीज़ होता है नहीं. Learn how to use it correctly and try to listen to the heartbeat of the family. You can make your own stethoscope, simple one that to play. Now that you know the stethoscope looks like, try to make one. Chalo theek hai. This is the process of making the stethoscope. Just try to do it. And I think this chapter is completed. Chapter completed. Thank you. Complete your work and take care.